Assalamu alaikum. Today the new lesson about MS Excel shortcut keys, and in this video lesson you will learn how to change or turn the data into a table. कि इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह आपने एक डेटा टाइप किया हुआ है शीट के अंदर MS Excel में और उस डेटे को टेबल में कन्वर्ट या चेंज करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करेंगे कीबोर्ड की मदद से, शॉर्टकट कीज़ की मदद से। तो जैसे आपने अपने डेटा को जो टाइप किया उसको जो है ना टेबल में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिंपली सेलेक्ट दैट डेटा विद हेल्प ऑफ माउस। कि आप माउस के लेफ्ट बटन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट यू विल सेलेक्ट द डेटा एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटा विद हेल्प ऑफ माउस simply press Ctrl plus T key from the keyboard. Your data will be converted into a table. Here you are viewing the option where is the data you of the table. कि अगर आपने कोई डेटा कोई और रखा हुआ है किसी जगह पर वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो सिंपली ओके पर प्रेस कर देंगे तो आपका डेटा जो है टेबल में तब्दील हो जाएगा। तो आप इसकी जो है ना स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं टेबल के। तो जो डेटा आपने टाइप किया था वो टेबल में तब्दील हो गया और यहाँ से आप उसकी डिफरेंट कलर और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कलर्स भी हैं। तो इस तरीके से आपने अपने डेटे को सिंपली शॉर्टकट कीज़ Ctrl plus T की मदद से अपने डेटे को टेबल में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, टर्न इनटू अ टेबल। You have turned your data into a table by pressing Ctrl plus T key from the keyboard. So easy and simple way to do this. So do watch, like and subscribe my channel. Thank you.